Hello everyone, this is Nitya, and this is the second part of the series which we had initiated yesterday. So, in case if you have landed on this part right now without watching the first part, then I would advise you to go through the first part, which we discussed all the important segments or important bullet points of the section 1 of the Heart of Darkness, and this is going to be the next part, that is the section 2 of the Heart of Darkness. And before initiating this, thank you to all those who have responded and uh, who who messaged and who gave the feedback and who gave the recommendations and suggestions on how to improve this series, and for letting me know that it is benefiting you in any way or in one way or other. So let's move on to the second part of the this series, Heart of Darkness. Uh, so ignore the background uh, chirping because I'm outside now, so it might the audio might not be as good as yesterday, but the content would remain same. Content's quality would be constant. Okay, let's move on to the next slide. So we were at the central station. That we discussed that Marlow was traveling from the outer station to the central station, and from the central station to the inner station. So just go to the first part if you have not checked, and go through all the series what we had covered till yet. And now we are going to discuss what happens at the central station. what happened? Sorry, what happens at the central station. So we came to know that a station manager at the central station was not so supportive to Marlow. Marlow calls him a chattering idiot who had blamed means station master had blamed Marlow's wrecked ship because the skipper or the captain of that ship was not good or capable. So this irritates Marlow, and Marlow thinks the station master as just someone who is a chattering idiot and who is an irritating fellow. This is all happening at the central station. We are now at the central station during the journey of Marlow, who has covered from River Thames to outer station, from the outer station to the central station, and from the central station he will go to the inner station, and inner station is where the goods lies. Okay, Marlow hears people talking about someone called goods. So this is the first time Marlow encounters the word goods, or someone here's a name of goods. Marlow meets a young agent who was also a brickmaker. Marlow meets a young agent means here Marlow meets a new people, or a new guy here who is a young agent, and he makes brick. He makes brick and he is a brickmaker. BM means brickmaker invites Marlow to his room. Marlow saw a painting of blindfolded woman with a torch in his room, brickmaker's room, and brickmaker briefs Marlow about goods. And brickmaker also tells him that कि वो जो painting है blindfolded woman with torch वो goods ने बनाया है, and brickmaker briefs Marlow about the goods, and this is the first time he hears the name of goods. एंड देर इज ऑल्सो टॉक्स ऑफ रिवेट्स. रिवेट्स कुछ नहीं है बल्कि नट है, नट वोल्ट है, जिसको स्टीम बोट को रिपेयर करने में मार्लो को रिवेट्स चाहिए था. सो जस्ट कीप इन माइंड दैट मार्लो रिक्वायर्ड रिवेट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड हिज स्टीम बोट, सो ही कैन ट्रेवल फ्रॉम द आउटर स्टेशन. So he can travel from the central station to the inner station. Talks of rivet to repair the steamboat. Without rivet the boat could not be repaired. So this is what happening in the central station. Station master supportive नहीं था. Marlow hears people talking about goods. Goods का नाम से familiar होता है. यहाँ पर एक young agent है जो कि brick maker भी है. वो brick maker बनाता है, bricks बनाता है, and वो उसको अपने रूम ले जाता है मार्लो को, और मार्लो को ब्रीफ करता है कुड्स के बारे में. और मार्लो वहाँ पर एक पेंटिंग देखता है जहाँ पर एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन हाथ में टॉर्च ली हुई है, और ब्रिक मेकर उसको बताता है कि वो कुड्स ने बनाया था. एंड देर इज ऑल्सो समथिंग एल्डराडो एक्सपेडिशन. एल्डराडो एक्सपेडिशन इज नथिंग बट there is a ship which is led by 5 members, which has 5 members, and that is led by manager's uncle that arrives at the central station. Okay, next slide. So now we are going to discuss someone very mysterious, a very interesting character, that is Kuds. So Kuds is the most mysterious character in this complete novella.
Good symbolizes the darker side of humanity, as we had discussed yesterday in the other psychological dimension or the off topic discussion. Goods is nothing but the goods is nothing but the darker side of humanity, that we all have goods inside us. His location is in the inner station, जहाँ पर मार्लो को मिलना है, और गुड्स का जो पोजीशन था या डेजिग्नेशन जिसको बोल सकते हैं, वो है आइवरी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का. दिस यू नीड टू रिमेंबर एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल. अगर एग्जाम में यू वुड राइट द एग्जैक्ट थिंग कि आइवरी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर था, तो the one who is checking the paper, he would be very sure कि if this guy knows or if this girls knows कि आइवरी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, then you get the vibes कि ये पढ़ के आया है और ये पढ़ के आई है, ऐसा. So this is something important, just 3 words and it would make your answer look really beautiful. Ivory procurement officer. His location is in the inner station. Okay, a very contrasting character, a very contrasting character है. Means everything about him is contrasting. वो एक side अच्छा भी है तो एक side बुरा भी है. He is sorry, his it's a typographical mistake. He is violent yet admired. काफी violent है वो. He tortures native yet they treat him as a god. नेटिव्स को काफी टॉर्चर करता है. लेटर यू वुड नो दैट कुड्स का जो बाउंड्री था, घर का जो बाउंड्री था, उस पे जो घेरा रहता है, उस पे उसके घेरे पे नेटिव्स का सिर काट के वहां पर गाड़ दिया गया था. सो इट दैट इज वेरी क्रूअल थिंग, येट दे ट्रीट हिम एज गॉड. एंड व्हाई, दैट इज व्हाई this is very this is very something which is very mysterious, that he kills people, he murders people, yet people refer him as a god. Why is it so? If this is making you curious, then that's the curiosity Marlow also had, कि ऐसा क्या है कुड्स के पास. He believed in the part of company sugar coated lie initially. जब वो शुरू आया था तो he believed that the main motive of company was to civilize people, to make them progressive, to make humanize them. But once he tastes the power, he forgets his motive. Power corrupts. His last words were the horror, the horror. ये याद रखना है कि उसका last word जो था मरने से पहले, वो था the horror, the horror. He is very honest. जब वो बाद में वहां पर इन स्टेशन चला जाता है तो ही इज वेरी ऑनेस्ट. ही इज वेरी ऑनेस्ट इन द सेंस कि ही नेवर सुगर कोटेड हिज एक्टिविटीज कि दैट आई एम डूइंग दिस टू सिविलाइज यू पीपल. ही वाज लाइक आई वांट आइवरी एंड आई विल गेट द आइवरी एट एनी कॉस्ट, बाय मर्डरिंग यू, बाय मेकिंग यू फील हेल्पलेस, बाय स्टार्विंग यू, बाय टॉर्चरिंग यू, आई विल टेक द आइवरी. एंड ही नेवर सुगर कोटेड कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं दैट आई एम सिविलाइजिंग यू पीपल. ही नेवर डिड ऑल दोज बुलशिट. ही वाज वेरी क्लियर अबाउट हिज एजेंडा दैट I am doing this just because I want ivory. And ये जो उसका honesty था, we can call it perverse honesty. Means ऐसा honesty का क्या फायदा? It was perverse honesty. Means pervert से, जैसे pervert is someone who is loose character, and perverse वहीं से आता है, perverse honesty. He has an African mistress, और उसकी जो बीबी थी वो एक खुद native थी, African mistress थी. Okay, it is a very interesting character and we'll see later. Happenings at the central station continues. आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल स्टेशन में क्या क्या हो रहा था. तो one evening Marlow was lying on his steamboat. He overheard the conversation of manager and his uncle. तो मैनेजर और उसके अंकल के बारे के बीच में जो बातचीत हो रहा था वो मार्लो सुनता है स्टीमबोट में जब वो बैठा था. तो मैनेजर फील्स दैट कुड्स विल टेक अप हिज जॉब. मैनेजर को लगता है कि कुड्स उसके जॉब से रिप्लेस कर देगा. जो स्टेशन मैनेजर का जॉब है सेंट्रल स्टेशन का, वो कुड्स आके उसके जॉब को रिप्लेस कर देगा, हथियार लेगा. बट अंकल अश्योर्स दैट वाइल्डरनेस विल टेक केयर ऑफ कुड्स. पर अंकल बोलते हैं कि यार वो बहुत, उसका तबीयत ऐसे भी खराब रहता है, एंड दिस क्लाइमेट एंड दिस जंगल विल टेक केयर ऑफ हिम. वो जल्द मर जाएगा, तुम चिंता मत करो. Marlow observes that manager hated codes, और उसको पता चल जाता है कि manager hated codes, and Marlow was nowhere in the conversation. He was just hearing those conversation by somewhere else. Manager tells his uncle about codes. Manager अपने अंकल को बताता है कोड्स के बारे में. नरेट्स फ्यू स्टोरीज अबाउट कोड्स, और कुछ स्टोरीज बताता है कोड्स के बारे में. सो मैनेजर इज फैमिलियर विद कोड्स बट नॉट हिज अंकल. उसके अंकल खुद से फैमिलियर नहीं थे. सो वन ऑफ इट इज वंस कुड्स वाज आस्क्ड टू ब्रिंग द बोट फुल ऑफ आइवरी. एक बार कुड्स को बोला गया था कि अब आइवरी का जो बोट है, बोट जिसमें बहुत सारा आइवरी भरा हुआ है, उसको लेके आओ भाई तुम सेंट्रल स्टेशन. बट कुड्स डिड नॉट ब्रिंग इट बिकॉज वन ऑफ द कुड्स वर्कर who was native got ill. लेकिन कुड्स उसको लेके नहीं आया. क्यों? क्योंकि कुड्स का जो एक साथी था जो कि नेटिव था वो बीमार था. Now here is the contrasting character where all the European traders or all the European officers mistreated natives, और यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि एक नेटिव उसका बीमार है, तो मतलब ट्राइबल जो उसका एक बीमार है, जो एक
ट्राइबल पीपल, एक जो उसका बीमार है तो वो उसके लिए अपना काम छोड़ देता है. सो मे बी दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 interesting about Quds, that he is very violent, he is extremely cruel, yet people fear him, yet people admire him. Okay, too many typos and okay, misspelling. Next, unfolding Quds. So we got to know Quds more about it here. Marlow begins to know Quds more now, कि अब वो मार्लो Quds के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहता है, ज़्यादा जानता है. He hears manager telling his uncle that once Quds said each station should be like a beacon on the road to better things, a center for trade, of course, but also for humanizing, improving, and instructing. So these were the thoughts of Quds before he went to the inner station. कि each station should be like beacon on the road to better things. कि हर स्टेशन जो इस रास्ते में पड़ता है, आउटर स्टेशन से इनर स्टेशन, आउटर स्टेशन से इनर स्टेशन के बीच में जो जितना छोटे छोटे स्टेशन पड़ता है, each स्टेशन शुड बी लाइक बीकन. बीकन मतलब जैसे एम्बुलेंस का बीकन होता है ऊपर में, पुलिस का बीकन होता है रेड कलर का, नेता लोग का बीकन होता है एम्बेसडर कार के ऊपर. तो हर स्टेशन एक बीकन की तरह होना चाहिए जहाँ पर ह्यूमनाइजिंग, इम्प्रूविंग और इंस्ट्रक्शन का काम हो. तो मार्लो को ये पता चलता है, मार्लो रियलाइजेस दैट पीपल नॉट ओनली हेट कुड्स जस्ट बिकॉज ही इज थ्रेट टू पीपल्स जॉब, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कुड्स हाई आइडियल्स. कि कुड्स का जो आइडियल्स था वो काफ़ी हाई था, इस वजह से लोग उसको हेट करते थे. ये मार्लो को पता चलता है. अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द एल्डोराडो एक्सपेडिशन, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एल्डोराडो एक्सपेडिशन के बारे में चर्चा करते हैं. एल्डोराडो एक्सपेडिशन कुछ ट्रबल में आ गया था क्योंकि उसमें उसमें जितने भी नेटिव्स थे वो मर चुके थे, आइदर ड्यू टू द स्टार्विंग और ड्यू टू क्रुएलिटी और ड्यू टू द टॉर्चर. और उन नेटिव्स को एक डोंकी से कंपेयर किया गया था कि डोंकी डाइड. So no compassion, nothing much to worry about. Again, it shows less respect natives got. The disregard for the human's life in the outer station as well as in the while of imperialism in the is very much visible. कि imperialism के अंदर क्या क्या ये लोग का खेल होता था वो सब काफ़ी यहाँ पर visible है, वो काफ़ी evident है. ये सब अभी तक सेंट्रल स्टेशन में हो रहा है. सेंट्रल स्टेशन में मार्लो continues his journey to the inner station from the outer station. Sorry, ये आउटर स्टेशन नहीं होना चाहिए, ये सेंट्रल स्टेशन होना चाहिए. मार्लो एट हिज फिलोसफिकल बेस्ट, और जैसे जैसे वो सेंट्रल स्टेशन से इनर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, इनर स्टेशन अपने स्टीम बोट में जा रहा है क्योंकि इनर स्टेशन में उसका जॉब रखा हुआ है और वहाँ पर उसको कुछ से भी मिलना है. तो मार्लो एट हिज फिलोसफिकल बेस्ट, वो एकदम फिलोसफिकल बन चुका है उस जर्नी के दौरान. कई बार हमारे साथ ऐसा होता है दैट वी turn philosophical while we are traveling on any bus or any train, and we are sitting beside the window seat, and we are just thinking about different perspective about our families, about our career, and we turn philosophical, and we turn too much philosophical कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, and we also start contemplating on everything. So Marlowe contemplates on everything he sees, feels pity, existential crisis. कि बहुत सारा ऐसा होता है कि why do we exist, what is the reason behind us, हमारा purpose क्या है, हमारा क्या होगा. So we all go through that experience at some point of time, some point of our life. So Marlowe is going through the same existential crisis. Ponder over the emotions, वो बहुत सोचता है मार्लो जैसे जैसे वो सेंट्रल स्टेशन से इनर स्टेशन की ओर बढ़ता है. Observes that more he moves toward the inner station, more he feels like he is going to the past in history. वो जैसे जैसे इनर स्टेशन की तरफ बढ़ते जाता है उसको लगता है कि वो हिस्ट्री में चला जा रहा है. क्यों हिस्ट्री में चला जा रहा है? कि वो जैसे जैसे अंदर जाता है, he sees more poverty, he sees more exploitation of the poor, he sees more nakedness, he sees more people hungry, naked, without any clothes. तो उसको ऐसा ऐसा लगता है जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है वैसे वैसे वो सिविलाइजेशन के पीछे जा रहा है, वो इतिहास में चलते जा रहा है जहाँ पर लोग के पास कपड़ा नहीं था, जहाँ पर लोग को ढंग नहीं था कैसे रहना है. So he feels like more he is going towards the inner station, more he is getting back into the history of the time and thinks how it would have been without the so called civilization. और वो सोचता है कि ऐसा ही रहा होगा पहले, बहुत पहले, जब इंसान कुछ कुछ इन्वेंट नहीं किया होगा जैसे ये लोग हैं. तो मतलब उस समय उसको वो दोनों साइड अपने आसपास वो देख सकता था. Thinks how it had been without so-called civilization and civilized behavior of the people.
और उसको लगता है कि ऐसा ही होता होगा जब सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं हुआ होगा और सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं होगा, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बिहेवियर। जर्नी टुवर्ड्स इन स्टेशन, और जैसे जैसे वो अंदर जाता है, ही सीज कैनिबल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर। Cannibals मतलब the one who eats man eater flesh, man flesh eating people. Cannibals surrounded on the either side of the journey in the show. The journey is very slow. Journey काफी धीरे धीरे चल रहा है वो लोग का, due to various reasons, and upstream journey है वो, ऊंचा का journey है। upstream downstream मैथ्स में पढ़े थे हम लोग कभी। upstream journey है। He worries that whether he would be able to see cuds at this pace। वो सोचता है कि अगर ऐसे चलते रहे तो कुड से मिल पाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि कुड्स का अंतिम समय था, वो काफी तबीयत उसका खराब था। Since Quds was very unwell, one of his black helmsmen gets killed। और इसी दौरान कैनिबल क्या करते हैं कि उसका जो हेल्प्समैन था, उसका एक नेटिव पीपल था, नेटिव वर्कर था, उसको मार देते हैं, और उसका फ्लैश खा लेते हैं, मार्लो का। सो मार्लो कंटेम्पलेट्स कि क्या ये वर्थ था कि हमको एक कुड्स से मिलने के लिए एक आदमी का जान गंवाना पड़ा, ताकि कैनिबल्स उसको खा सके और शांत रह सके। सो द जर्नी टूवर्ड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस और द इनर स्टेशन कंटिन्यू। तो जैसे जैसे हम लोग इनर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वो हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। डार्कनेस का एक वो गढ़ है, वो दैट इज समथिंग वेयर डार्कनेस रिसाइड्स, बट दैट इज वेरी मच आयरॉनिकल, क्योंकि डार्कनेस हम सबके अंदर है। एंड कुड्स, ऐसा तो लग रहा है कि कुड्स इज द इनर स्टेशन, बट वी आर कुड्स एंड कुड्स लाई विद इन अस। सो जस्ट अ ऑफ टॉपिक डिस्कशन, इफ यू हैव सीन द डार्क नाइट, जिसमें एक जोकर रहता है और बैटमैन के बीच में फाइट रहता है, एंड देयर इज अ कोट, मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट जोकर मेक्स मोर सेंस देन बैटमैन। सो let's see what happens at the inner station. So this is it for today, and the third segment will be posted soon. Thank you. So do let me know if it is helping you or not. Good night.